in, breathe out. Another breath in, breathe out completely. Now we take a breath for Om. 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 Now relax और धीरे धीरे आप अपने आंखें खोल सकते हो. Very slowly you may open your eyes. So today we will welcome our speaker for the day, Ms. Priti Rao. Welcome, madam, to this session today. I hope you are able to hear. Are you all able to hear, please? Can anybody confirm? Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. आवाज आ रही है आपका? Yes, ma'am. Yes. ठीक ठीक है. अपने स्पीकर आ गए ना आज? मैडम को हाईलाइट कीजिए ना. Riddhi, can you highlight madam today? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Preeti ji, can you please message me from your ID because मैं आपको मीटिंग में ढूंढ नहीं पा रही हूँ. ठीक है. In the meantime, I will introduce Ms. Priti Rao. She is a postgraduate in marketing from Bangalore University. And she is also the founder and driving force behind Soil and Soul Foundation and Bioenzyme Entrepreneurs Academy. She's attached to this for the past 2 decades. And apart from this, she's also a sustainability practitioner and yoga teacher. She holds a black belt in karate and has won a national gold medal for flying and aero modeling. So talented. Welcome, Ms. Priti Rao, on this. And over to you now. Thank you. Namaste. It's a pleasure to come here and talk to all of you. So I will. So here my topic would be on bioenzyme and why this bioenzyme is important and what is this bioenzyme, how each one of us can work around bioenzyme. So we will just look into the very basic information about the enzymes today and how the Krishi would be, beneficials, get the benefit out of this. So I would like to share this file. Yeah, so see, today we know
why, what is happening around, अभी हमारे पर्यावरण में हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, हम सबको मालूम है और we understand, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम लोग सब अटक जाते हैं कि इसको आगे क्या करना है, what I can do, what just being at home or single individual, what I can do about it. If there is some problem और कोई गलती हो रही है हमसे, तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, तो हम लोग आज उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो जैसे हमें मालूम है कि हम पूरे सब जगह इकोलॉजिकल चैलेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, और बहुत कुछ जो देखा जाए तो हमारे घर से जो जाता है, जो हम लोग केमिकल्स या हार्मफुल केमिकल्स जो अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, उसको उससे हो रहा है। लेकिन अगर बायोएंजाइम का देखा जाए तो इट इज एक्चुअली प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन क्रिएटिंग द हेल्थियर प्लैनेट। नाउ अगर जब हम लोग बोलते हैं कि इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, तो ये इकोलॉजिकल चैलेंजेस में हो क्या रहा है, व्हाई एंड व्हाट इज हैपनिंग। तो व्हेन वी सी हमारा जैसे इकोसिस्टम या हमारे फूड चेन हमने बहुत देखा है, पढ़ा है फूड चेन के बारे में, वाटर साइकिल के बारे में, और ऐसे छोटी छोटी चीजें हमने बहुत ही प्राइमरी क्लासेस में पढ़ी हैं। तो हमारा जो फूड चेन है, क्या it has around 600,000 lakhs of my entire living thing in one food chain. It is not just the plant, animal, and human. We have 600,000 lakhs and all these are microbes. So all these microbes, they play such a vital role in our life to bring, to keep that ecological balance around us. So, when these microbes, it, whatever we use, I mean, I'm not talking only about these chemicals, I'm talking about the harmful chemical, whatever we use today, whether we use it for ourselves or for our personal care or for home care or for our garden और हमें खेती बाड़ी, हमें जिसमें भी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं केमिकल, ये कहीं ना कहीं उस अच्छे माइक्रोब्स को, जो माइक्रोबियल वर्ल्ड है, उसको तोड़ रहा है, उसको, it is actually destroying that microbial world. See, when we, I'll just give a simple example. When we cover our face with the plastic, we don't breathe. We can't breathe. But these microbes are continuously getting killed like that. Continuously they're getting suffocated and getting killed. So because of that, there are so much of imbalance has happened in our ecology itself. तो अभी जैसे आप पानी को लीजिए या हमारी मिट्टी को लीजिए या हमारे हवा को लीजिए, सब जगह कहीं ना कहीं ये माइक्रोब्स, जो अच्छे माइक्रोब्स हैं, दे आर मिसिंग. We have microbes, say around out of 100% of microbes, 95% microbes are good. They are beneficial. They are helping us in some or the other way. And only 5%, which is actually a challenging one, I can say. I don't say they're bad because they have their own role to play in our ecosystem. But just to handle those 5% of microbes, the bad microbes, we are destroying this 95% of microbes, good microbes also. So that is causing a problem. Now, we have, what does this bioenzyme do? Bioenzyme is full of good microbes and it is just trying to bring the balance. And believe me, it is doing amazing work. We, इसमें अगर हम लोग अपने सिस्टम को देखें, अगर पानी का सिस्टम है जिसमें गंदा नाला है, उसमें बहुत बदबू आ रही है, तो when we have you ever thought what is that rotten smell which is coming? गंदी बदबू आती है, हम लोग अपने मुंह को, नाक पर से ढक के निकल जाते हैं. But all these dirty smell or what
is causing is lack of oxygen. There's something which is rotting inside and it is not getting sufficient oxygen there. And these enzymes has aerobic bacteria. And it can, that's the only way, it just instantly, it can manage any kind of bad smell. The water, if our water is healthy, our soil is healthy, our groundwater is healthy, and our air is healthy. So this is very crucial element in our ecosystem on our earth to keep the water neat and hygiene. और इसको खराब करने में हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो हमें वो देखेंगे कैसे करना है हमें. So this introduction of bioenzyme. So these bioenzymes are the natural catalyst. You know, it increases the microbial activities and it can be used in various industries to reduce the harmful effect of chemicals. And how does it do? It just creates a lot of aerobic bacteria. It just creates a lot of good bacteria around and keeps it clean. Enzyme can be used by any industry which is using water. And there are different ways, there are different ways of handling, there are different enzymes that can handle, particular challenge, whatever we are facing of a particular use. We can't use the same enzyme for everything. So there are different enzymes, there are different challenges. Every industry has its own challenge, and wherever the water is used, the enzymes can be used. Now, how does this enzyme, what is the mechanism? How does of this enzyme action? What does it do? It breaks down the complex molecules into the simpler one. The entire, if you see, our system is made up of protein. And if it is such a complex molecular structure, it breaks down in a simpler piece and they're not very harmful. That can be digested well. So it just does the simple thing. It can be used in any industry, in our home, in our agriculture, to reduce all kind of chemical things, to keep our soil, air and water clean. Now these, when we use it in the farm, why we are talking about this in the farming? Because today when we, most of the chemicals which are used in the farm, it is actually creating a lot of bad air for the in that premises nearby, in the village, in that environment, and it also polluting the groundwater. The same chemical, it is depleting our water, the groundwater, it is depleting the quality of the soil. So these enzymes are so much required to increase that microbial activity under the soil. मैंने पिछले भी कुछ अटेंड किए हैं यहाँ पे जो क्लासेस हुई हैं, and they are all so meaningful when we talk about the microbial actions. So these enzymes, it just activates those kind of action to bring the balance around us. So when there is a proper balance, everything else falls into the place. And the soil is nothing when we, these are all with our body, how we compare the whole thing with our body. और हमें unnecessary जैसे किसी दवाई की जरूरत नहीं है, वैसे ही मिट्टी को भी नहीं है. We don't have to keep suffocating the soil or the microbes in the soil with unnecessary chemical. हमें इतना ज़्यादा chemical डालने का ज़रूरत ही नहीं है. हमें उनको उसी ढंग से we need to give them that ecosystem to grow, and that ecosystem is made by these enzymes. Now,
if you ask me how these enzymes are different from Jivamrit or Panchagavya, whatever we make from our cows, urine and cow dung. See, cow dung and cow urine are excellent, but there are places where there are no cows, where there are no, you don't get those cow dung. How do we revive our soil and water there? But the waste is everywhere. You know, these enzymes are made from the kitchen waste. And the best part of making the enzymes is it generates ozone, it generates oxygen while going through the fermentation. And this has been proven. So why not? Why not do that? And this has the capacity of multiplying any kind of good bacteria, which can enhance anywhere. Now, what is the principle of bioenzyme? Bioenzyme has a very simple functions. It works, it catalyzes, it decomposes, it transforms, and it recombines and replenish the microbes. Whatever is originally lost, जो भी microbes जो कभी थे हमारे मिट्टी में, हमारे पानी में या हवा में, उसको ये वापस लाने की इसमें क्षमता है. It brings back that microbes. It increases the oxygen content to make aerobic bacteria. So when there are more oxygen, when there is more aerobic bacteria, it restores the ecology. You know, agar hum isko, if we understand this principle, we understand how our body also works. It's, and when you look at this, you know, when you agar hum is dekhte hain ki how does this aerobic bacteria, if it is becoming a dominant group in all of in the entire process, I compare it with pranayam. जो हम लोग प्राणायाम करते हैं, the way the oxygen increases in our body, the way oxygen increases in every cell of our body, and that's how we restore our body function. That's how the yoga talks to us. That's how the yoga tells us about all this. And they're very, you know, every cells in our body, it functions efficiently only when there is a sufficient oxygen supply. और कभी कहीं पे कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी हाथ दर्द हो रहा है, it's basically that part of the body is not getting sufficient supply of oxygen. So, you know, this is the same thing bioenzyme is doing. Where there is no oxygen, where we have the problem like, you know, dirty water or landfill का है या कहीं जहाँ से बदबू आती है, so it creates that ecosystem to have good oxygen supply. So there are lots of benefits about this enzyme. It enhances the soil health and fertility through the nutrients available and the organic matter जो उसमें है soil में, it decomposes and turns into the nutrients for the microbes and for the soil. It increases the crop yield and productivity due to enhanced nutrients uptake and plant growth promotion. So and all these things we have tried it in many fields, and we have seen that how the crop production or the yield has gone up by using enzymes. And when we use these enzymes for the good soil, when your soil is good, the plant is automatically good. And when the plant is good, your yield is definitely nutritious. And you know, the pest attacks happens only when there is a problem, when the plant is weak, when the plant doesn't have sufficient nutrition. And how do we do that? We just supply to the soil. We give them good soil to grow. And the natural farming is all about that.
Krishi is just about that, giving them the good environment to grow, and automatically the plants are good, their yield is good and nutritious. And these are all, when we start making these, and we are, the academy is actually in increasing the, we are enabling the farmers to make their own bioenzyme according to their requirement. That helps them to reduce their dependency on outer world. They don't have to depend on anyone. They can create these enzymes themselves in the farm and they can use it. It is as economical as this and as ecological as this. Bioremediation of contaminated soil and water bodies, mitigating environmental pollutions. So this is the way it helps bioremediating our soil and water. It helps in reviving our soil. It helps in reviving our water bodies. And the principle is same. It is just growing the good oxygen supply. We can make it from the crop residues. So it helps in reducing the waste from the farm. And that's how the sustainable agriculture is all about. How do we use what we are using it in the farm, and any residue we can use it for making the enzymes. Improve water quality and reduce soil erosion through the promotion of healthy soil ecosystem. So when we use this, we are actually working on the entire ecosystem. We are working on soil, we are working on water, and we are working on the air. Everything is interconnected, and the farming plays a vital role in keeping our ecosystem in a good health. So we will be now applications of enzyme. There are many applications of enzyme. It's like it can degrade the harmful chemical in a very, very economical way. It will break down the pollutant. It breaks down the pollutant and convert it as a carbonate and nitrate, which are good for soil and for aquatic life. It's an excellent alternative to chemical catalyst, and that's how it helps in reviving things. So these are the different applications. How does it work in breaking down the pollutant, either in air or in the water? So now what I'll do, if you have kept the bottles, jaggery and the peels ready, we will go through a small video first, and then I will show you the practically how it is done. That is just to get an idea. So I will just play, I will remove this share and I will share the video.
self-introduction in real-life environment, campaign has two classes feature. Okay, so this was the basic thing, and I would like you to see how do we do that. So you can take any size of container, any size, and but take the plastic container, because while making these enzymes, I know many of you must be making it also, but let us revise the whole thing. So any plastic container will do. So whatever the size of container, the ratio is 1:3:10, as the video said. So now in this container, we take 60% of water, whatever size of the container. Please make a note. So whatever size of the container, whether it is half-liter bottle or it is 100-liter bottle, drum, it just doesn't matter. Add 60% of water. So now this is not even half a liter. So we have just taken, say, around 250 ml of water in this. Okay, so we will do the entire thing. So when you take the 60%, and I think I will have to. Okay, now you will be able to see it. So now this 60% of water, we add the peels. It doesn't matter whether you add peels first or you add jaggery first. It just doesn't matter. So you can add whatever is residue from your kitchen. We add, since we are going to make this as a cleaning material, we are using lemon. Lemon works excellently. And these are peels. See, we are not using the lemon. Lemon is for eating. We don't believe in wasting our food. We don't believe in wasting our food. We are just using the residue from the kitchen slab. Now, this is lemon. I'm putting little neem also in this. These are neem leaves, okay? And these are, there are some Indian wormwood, or it's called Kasturi Tulsi. So what I'm trying to say is you can put any kind of waste from your kitchen. It depends on what you intend to use it for. So this is very important to understand what enzyme are we making, and this is what are we going to use it for. So this I have put because I want to make it as my insect repellent. I can just spray it around for keeping the mosquitoes away. And here I have some 10 gram, one portion of the water as a jaggery. So in this, what happens when you add 60% of water, we keep adding the peels till your water level is 80%. So water level has to raise till 80%. That means you have already added 3 portion of the fruit waste. And in this, we add 10% of water quantity as a jaggery. So this is around 25 grams of jaggery. I have already measured and I've got it in this. So 25 grams of jaggery, we put it in this. Now these are leaves. So you will see now the water. Okay, now the water level is 80%. We don't have to bring it till the neck. ऊपर तक नहीं लाना है, पानी को यहाँ तक ही रखना है. और इसमें बहुत अभी next 10 days we will get lot of gasification. बहुत इसमें गैस बनता है. हमने बस डाल दिया और इसको शेक किया है. इसमें लेमन है, इसमें तुलसी है और नीम है. सो ये हम लोग मच्छर के लिए मस्किटो रिपेलेंट को बनाया है हमने इसमें. और इसमें डेट लिखना बहुत जरूरी है.
So write down the date. So today, आज का day जैसे 26 तारीख है. So 26th May 2023. And this will be ready by 90 days. So 3 months है ना, तो ये भी ये May है, June, July, August. So say around 26th of August 2023. So I've written the starting date. I have written the end date on the cap here. हाँ, और इसमें क्या क्या डाला है आप पेपर में अगर लिख लोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा. इसमें क्या क्या डाला है, what all ingredient you have put, so you know what are you making. ये ऐसे ही मतलब ये नहीं कि 3 महीने बाद भूल गए कि इसमें क्या डाला था, हमने कैसे बनाया था. तो if we have the record of everything, that is always good. तो इसमें that's all. And every day इसको 10 दिन तक हमें इसको रोज थोड़ा सा खोलना है और बंद कर देना. So for the next 10 days, today is 26th of May. So for next 10 days, we need to open till 5th June. Every day थोड़ा सा से खोल के इसको बंद करना है. और उसके बाद और आपको खुद ही दिखेगा वो रोज जिस दिन आपने नहीं खोला ना, तो आई मीन द डे द मोमेंट यू ओपन इट विल फिज आउट लाइक हमारा जो कोल्ड ड्रिंक होता है ना उसके जैसा पूरा फिज हो जाता है. एंड इफ यू डोंट ओपन इट एवरी डे फॉर नेक्स्ट 10 days, इट विल आई मीन इट जस्ट गोज, इट ब्लोज अप लाइक कोको कोला. ऐसे पूरा आपका फेशियल भी हो जाएगा, इससे इतना ज्यादा हो जाएगा. सो मेक श्योर यू ओपन इट every day for next 10 days. And you know, when you open it, when you see the you will feel that, you know, the release of gas, and that is ozone and oxygen. We are so and this has been proven whether you open it or you don't open it, if the enzymes are making somewhere, it is generating oxygen. So this is एक तो देखिए इसका advantage, it is so advantage, like you know, first you use your kitchen waste for making this. इसके लिए हमें कहीं और से कुछ ingredient भी लाने की जरूरत नहीं है. और what is that? It's okay, you can use it with whatever. For jaggery, for lemon and orange, like the citrus, somebody had put the question. So lemon and orange, since it is citrus, you can use it as a cleaner. You can use it for anything. There is no limit to explore, you know, what you can do. And towards the end, whenever we finish the classes, I will give you the books, maybe to explore more. How do you find out what we can use it for, what, which herb, anything. You can make it with anything. This is made, this was originally called as garbage enzyme, not the bioenzyme. Garbage enzyme, which was initially introduced to the world by Dr. Rochapon. She is from Thailand, and she is the one who gave this formula to the world to make enzymes like this. And when now it is all floating, you will find all your ingredients floating on top. But at the end of 90 days, it will be down, it will settle down. All this pulp would be at the bottom. You know, it is, these are all very simple thing what we can do. And I mean, if you say only oranges and lemon, they are citrus, so it can be used for cleaning anything at home. Anything means anything. आपको मालूम है नींबू कितना strong होता है. पहले भी, I mean, we know how our grannies used to use it. Either we use it on our face for cleaning, you know, getting rid of suntan, or we use it on the clothes to remove the stain. Anywhere. So this is that versatile.
It is just that it is made from there. So we need to, so all this proportion we will talk slowly what we can use it. Somebody was asking me. So this can be used, and if you see, there's a lot to explore in this area. So you can, our academy is doing we are doing a lot of work in this, and we are also doing research to find out the more, the versatile potential what enzyme has got with the university, various universities. So Holkar University in Indore is helping us in doing, figuring out a lot of potential of using these enzymes in farming. And for different thing, we use it in a different ratio or different dilution. And the reason we use the plastic, because of gasification, it should not burst. If there is any metal or any glass container, it will burst. It has so much of pressure inside. Tomorrow morning, all of you will see, you will just open this and you will know how that pressure comes out. You will be amazed with every small step which is coming out. So we use the plastic container because it has a capability of expanding with a gas. So the plastic container is must, and it has to be kept in the dry area. Make sure you have your dates and all that data marked on your container in a proper way. And first 10 days is very crucial. Again and again, I'm telling, otherwise, sometime the container bursts, sometime it just fizzes out, the whole thing. I've seen the whole house getting spread with these enzymes. So there is no mistake if you get more gas, if it goes for 15, 20 days, absolutely there is no mistake. But this again, the quality of ingredient what we put in that, it depends on that. So usually after 10 days it reduces and we don't need it. But in case, it's absolutely fine to release the gas if in case it is fermenting more. And this are this is a very simple method. This is more you make, more you get polished in your hand and you're making. These are all, this is very, so more you make, so more, it's all on every hand. How does it work? And don't worry too much about it. I know the first 90 days is always an anxious month. 90 days, when these enzymes are getting ready, when do I use it? And we will provide you all the way it can be used, the way, what dilution. So every application has its own dilution. So we will have this, I will share that document with all of you. Any doubt in this, you can ask. So there are different, for the farming, usually again, it is all tailored. The dilutions all are tailor-made for farming. If we have to make, we need to see the soil quality. What is the quality of soil? What is it lacking? What does it has more? And what enzyme do we use for what? But in general, if the soil is good, we use 1:1000 ratio for the soil application. So in 1000 liter of water is just 1 liter of enzyme, and that works wonder. So it all depends, as I said, what do we need it as of, so it has taken us a lot of time to formulate the products for products from Bioenzyme for different applications, which are tried, tested,
And again, the researchers from Holker College, they have helped us in formulating these products. So these are something really amazing, and and nothing is absolutely nothing. Yes, it is. I've been talking about insecticide, fungicide. What you're asking. Someone is asking me, can we use it as an insecticide or fungicide for the plants? See, I'm talking about holistic application of this. I did share some time back, when our soil is healthy, our plants are automatically healthy. So we need to work on the food or the nutrition we are feeding to our plants. So when your plant is healthy, it will not attract any pest. वो पेस्ट को हम ऐसे ही भगा देंगे, वो the pest will not come close to the plant. Your plant need to be healthy, your soil need to be healthy. But yes, we have worked on that, and the small like aphids and millipede and all that can be definitely taken care. And this is not just this is antibacterial, antifungal, antiviral. So when we use this at home, as I said, the microbes around my house, in the air, in the water, they're all good. It protects. We have done disinfecting the village during COVID only with these enzymes. We have sprayed enzyme in entire village. So these are just the application what we've been trying, but I don't, wow, superb. Lovely. Lovely. It's nice, but I think the water is less in this, but you have to add 60% water, and you have to keep adding the peels till the water level rises to 80%. I think this is Resham Singh ji, Barar. आपका पानी 80% तक ऊपर तक आना चाहिए. ऊपर में थोड़ा सा बॉटल खाली छोड़ना है, वो गैस के लिए. आपका अभी पानी का लेवल बहुत नीचे है. Anyone else? We use these enzymes for? Yes, we are using lot of enzyme for cleaning the river and the lakes across India. So we actually, when you look into the ecosystem of river and all that, we don't have to touch river at all. We need to manage the dirty water which is flowing into the river. So for all, I will definitely talk about it, and there's a lot to talk about the cleaning river, cleaning landfill, and let us talk first till now. Any other doubt anyone has got? We will definitely discuss this, Bhavna. Yeah, Priti ji. Yes. Am I audible? Chintan here. Yes, you're audible, Chintan. Yeah. प्रीति जी, यहाँ पर मुझे एक दो सवाल ये लोगों के बिहाफ के ऊपर ये पूछना है कि there are so many some doubts कि whether this can be completed in 90 days. Before that we can complete it by using the yeast. जो yeast बाजार में मिलता है उसको डालकर लोग 30 days के अंदर भी उसकी प्रक्रिया को जड़बी से कर देते हैं. तो ये नहीं करना है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए. और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि which are the items for which we cannot use to make the enzyme, like onion का, garlic का नहीं बनाना है enzyme. तो इसके बारे में भी मैं चाहता हूँ कि आप बताएं उसके बारे में थोड़ा. So yeah, there are you will find a lot of videos which talks about the yeast. Put the yeast, थोड़ा सा yeast डाल दो तो ये fermentation का process fast हो जाता है. 90 days के बजाय 30 days में हो जाता है. तो उसमें जो हमने observe किया है, ये microbes settle नहीं रहते हैं. They are very violent even after
after 30 days, if you put an yeast and accelerate the process of fermentation for 30 days, we have seen the microbes are not settled. Your microbes are very hyperactive and you don't get the good enzyme. The results are not that satisfying. So we prefer, and we tell people, we advise people to go through the proper cycle of 90 days. No, I can see this. Someone is asking me about 1:100 ratio bioenzyme have diverse effect in irrigation or foliar spray. See, again, we advise only after checking the soil. Soil में क्या प्रॉब्लम, कितना उसमें न्यूट्रिशन है, कितना नहीं है, और उसमें ज्यादा अगर न्यूट्रिशन चाहिए तो हम उसको ज्यादा डाइल्यूट करते हैं. And this is the world where we say the less is more. तो जितना कम एंजाइम रहता है वो उतना ज्यादा इफेक्टिव होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एंजाइम आर वी यूजिंग एंड फॉर व्हाट आर वी यूजिंग. या you can make it from anything, raw mango, पका mango, melon, जिससे भी आप हर चीज से बना सकते हैं. No, it doesn't matter what water you use. Here when you see the water is H2O, so we are just using that H2O, 2 hydrogen molecule and 1 oxygen molecule, and end of it, when enzyme has been tested, it has lot of minerals and vitamins in that. So we can, for flower also it is the same ratio. Wow, wonderful, Bhavna. I can see your container, but the water कम है इसमें, पानी कम है आपका, ठीक से नहीं आया है. Water has to be at 80% of the level. आपने पानी कम डाला है. और फ्लावर का भी रेशियो सेम होता है, बट द फ्लावर इज वॉल्यूमस, उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, बट रेशियो इज सेम. सी खरपतवार जो आप बात कर रहे हैं, इसका वो कौन सा है, क्या है, वो हमें देखना है, क्योंकि जो ये वीड्स होते हैं, ये I will not tell you to make enzyme out of it, because many of them are not very good for our plants. So I would rather not have those kind of microbes. But to remove that, to reduce that खरपतवार, ये mulching या covering up the soil is very important. सूखे पत्ते से उसको ढका ज्यादा important है, तो उससे हम लोग अपने weeds को बचा सकते हैं. This is very nice. We have made, I can see many bottles here. Lovely. हिंदी में भी बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी बोल रहे हैं. You can add tomorrow more if your residue or if your biomass is less, you can add it tomorrow to bring it to that level. But the water level, make sure you are correct in your proportion. Getting good enzyme is very important, and it depends so much into the proportion what you're using. So proportion is proportion of water, proportion of jaggery, proportion of the peels or the biomass what we are using. That is very important. So that is not the fungus what is floating, Asha Jalan, that is not the fungus. अगर आपको ऊपर में white दिख रहा है, float हो रहा है, तो वो fungus नहीं है, वो yeast है. And those yeast are the one which can be used for baking your bread. It is edible yeast. So it is not bad, it is good. See, it is not, there's no rough estimate. It is just 1:3:10 ratio. एक में एक जैगरी है, 3 भाग फ्रूट्स या वेजिटेबल पील्स है, और 10 पानी है.
You can add ripe mango peels. You can do it. You can add ripe. तो बनाने में और किसी को कोई confusion है? We can keep it in fridge, Kena, the peels. You can keep it in freezer rather, because we need to, we can't dry it. We don't get good enzyme with a dried one. Everything dries up. So to maintain that moisture, we freeze it you can freeze it and use it when you have sufficient peels. आप बना सकते हैं, आराम से आप आलू का बना सकते हैं. See, I will share that book, what we have written, Academy has written on the kind of ingredient what we use for that. So we will definitely share all the details with you. All of you will get your copy. The soft copy, you will get it. हिंदी में, इंग्लिश में, कुछ डॉक्यूमेंट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो वो हम आपसे शेयर करेंगे. आप इसको यूज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. आपको और भी कुछ एंजाइम्स के बारे में, अगर हमने अभी रिसेंटली हमने G20 किया था बायो एंजाइम पे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज या बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिले जहाँ पे हम रिसर्च कर सकते हैं. आप ये ऐसा क्यों करता है, ऐसे क्यों नहीं करता है, कितना डालना है, इससे कर सकते हैं. मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप हमसे पूछते हैं वो हम लोग यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करके वहाँ पे रिसर्च शुरू करेंगे. तो ये पूरा हमने G20 बायोएंजाइम पे कर दिया था. इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है और बहुत ही अच्छा गया इवेंट. 35 speakers थे, 35 prominent speakers who had come, who were talking only about the microbes and how do we revive, because this is something which it's a concern for everybody. Every environmentalist want to bring back the balance in our ecology. तो वो कितने लोग इस पे काम कर रहे हैं वो हमें पता चला बॉम्बे में. और जो इसकी हमारी जो टीचर हैं, जो हमें डॉक्टर रोशुकॉन हैं, वो थाईलैंड में उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं. और हम लोग यहाँ पे साल में एक बार यहाँ से लोगों को लेके जाते हैं जो सीरियस हैं, जो इसको सीखना चाहते हैं, जो इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे देश के पानी और मिट्टी को थोड़ा संभालने में हमारी मदद करना चाहते हैं. और तो वो उनको हम साथ लेके जाते हैं थाईलैंड, और वहाँ पे वो डॉक्टर रोशोकॉन से डायरेक्टली सीख के और फिर हम लोग वापस आके यहाँ पे कुछ करते हैं. तो ये भी इस साल हम लोग सितंबर में जाएंगे थाईलैंड. और बायोएंजाइम्स के बाद, बिकॉज ये बायोएंजाइम का वर्ल्ड बहुत ही बड़ा है, इसमें आप जितने क्वेश्चंस, आई मीन क्वेश्चंस खत्म ही नहीं होते, इतने ज्यादा है. और हम लोग कोशिश करते हैं हर तरह की क्वेश्चंस के आंसर को दे सके. कैन वी ऐड बायोएंजाइम इन माय इरिगेशन? यस, यू कैन, वेरी मच यू कैन ऐड इन योर इरिगेशन वाटर टैंक, and it will grow your fish. If you have guppies in your tank, it is very healthy for all the fish. We have seen the health of fish improving when we use it for cleaning the lakes and river. We have seen the way these fish, the aquatic life, it enhances. It can be definitely used for drinking water. I use everyday enzyme to put it in my water and drink. It's all about good microbes, but I mean, it's only for personal use. It is not for any marketing thing. But for drinking, definitely we make it only with the fruits. We don't use the peels for making that. So what we use for what, किस चीज का हमें किसके लिए हम यूज करते हैं, वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है. We can use for medicinal purpose, but since I'm not a doctor, I'm not going to advise you anything. अपना
हमें एक आप देखिए, खुद बनाइए पहले। और काफी यहाँ पे डॉक्टर्स ने किया है इस पे एक्सपेरिमेंट। और जो हमारे अरिष्टास होते हैं जो आयुर्वेदा में, वो भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। अपना मैं बता रही हूँ, हिंदी में भी सब कुछ बता रही हूँ। इसमें काफी सिंपल चीज हुई है। तो इसमें और कुछ आपसे कोई कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। See, you can use it. The proportion is just the ratio, the proportion, whether it's a cup or a bucket or a drum, 1:3:10. So just look into the proportion. If you're doing with a cup, take 1 cup of jaggery, 3 cups of the biomass, and 10 cups of water. That's it. So 1:3:10. That's it. For weighing scale, yes, I did weigh my jaggery if it is the one portion of the water what we have taken. It's always good to do that because it gives, and when we do it in the larger quantity, like the big drums, it's always good to go by weight to get the good enzyme. So this, you can join our academy if you really want to explore this area of bioenzyme. You can join. हमारा जो website है beacademy.in, उससे आप इसको join कर। नहीं, dry leaves से नहीं बनेगा ये enzyme। Dry leaves को हम compost बना देते हैं, उसमें कुछ पोषण नहीं रहता है। And we are talking here all about nutrition and all about जो पोषण बोलते हैं ना वो। So drinking water may, it all depends what enzyme are you making. If you make it with a fruit, just 1 drop in 15 liters of water is enough. कंटेनर कितना भी बड़ा हो, कितना भी हो, रेशियो नहीं बदलेगा। और जितना रेशियो है वैसे ही उतना ही बनाना है। I have carried bioenzyme in the flight, and not the fresh one, of course. So it has to settle, the microbes has to settle down. So old bioenzyme, you can definitely carry it. Just pack it well, that's it. I have carried it to different countries also, so it's all good. So anything till now, any other doubt if you have till now? Otherwise, then we'll go further about, or any other thing. Okay, the life, it is immortal. It doesn't die. It's just the microbes, and it keep multiplying. It keep changing the phases. That's it. It is immortal. You can make it with any fruit. You know, the fruit, you can use oranges, you can use grapes, you can use apple, and any of these will work. Yes, you can make it with all this fresh fruit, with apples, oranges, and they are good. See, I don't buy the bottled water. It's been ages since I bought the bottled water, and even while traveling, I don't buy. So I just fill the water from any tap. If I'm traveling by train, any tap, and I just add my 1 or 2 drops of enzyme, and that takes care of entire thing. I don't buy bottled water. So I believe this enzyme so much. What is the life? Enzyme is immortal. Water chestnuts peel. Not the thick one. I mean, if it is you can make it with anything. Chestnut peels also. If it is not hard, you can definitely use it. To keep the, yes, container has to be tight, and while making for 90 days, and after that it's okay to keep it as you wish. What will be there is no validity. The older the enzyme, the more, I mean, I have enzymes which are more than 10-year-old.
So I have seen the Dr. Roshokon has 40-year-old enzymes also, and it is as fresh as any other. So Dr. Roshokon has I can say it's a museum of enzyme. She has made so much of enzyme in her life. You don't have to change, there is no glass. You can change it. I mean, the filtered one, you can keep it in the glass container after 3 months. That is not an issue. 2 drops in a liter. See, I not even 2 drops. 1 drop is enough for a liter. मेरा सवाल था, मेरा कंटेनर 2 लीटर का है और मैंने इसमें 100 ग्राम जैविक दिया. हाँ, तो आपका ठीक है ना, ये जो आपने बनाया है रेशम जी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऊपर में खाली रखना जरूरी है क्योंकि उसमें गैस आ जाता है, तो लेकिन उसको खोलना जरूरी है. जब तक आपका प्रोपोर्शन ठीक है, इट डजंट मैटर. You can stain it, yeah. You can stain it, you can keep it like that. There is no problem at all. और ये पता है इसका जो साइकिल है ना, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग. फर्स्ट थिंग इज इट इज मेड फ्रॉम द किचन वेस्ट. और जब ये बन रहा होता है, जब इसका फर्मेंटेशन हम लोग डाल देते हैं, so it releases oxygen and ozone, what I said. And after it becomes the product, at the end of it, we can use it for many things. So whatever we use it, and when it drains out from the drain, when we are cleaning the at home for our floor, or किसी भी चीज के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, उसको अगर आप नाली में भी डालोगे ना, तो 1 liter of enzyme, it cleans up 1000 liters of sewage water. So those microbes are, as it is flowing into it, it is cleaning and going. It breaks down those pollutant in a simpler form, and it makes it more acceptable in nature than the scenario today. So अगर आपका enzyme अगर आपको पसंद नहीं भी आ रहा है, उसको भी आप अगर डाल के, if you just drain it up in your house, it is working. So it's such a beautiful process. पहले ये waste से बना, और जाते जाते भी it has been cleaning up things and going down the drain. So when we control our drainage from home, our rivers will never be dirty. We need to manage that. जितने घर हैं, अगर आपको यूज नहीं भी करना है, बना के आप उसमें भी डालोगे, and it is like a curds. So एक बार ऐसा बना है, next time you will not need jaggery also. You can just use little bit of these old enzyme, the pulp, whatever is remaining, and add some water and some more pulp, and your next batch is ready. So बनाने का तरीका इतना आसान है और इसमें खर्चा बहुत कम है. The only thing what each one of us हमें एक एक को करना है कि इसको बस ड्रेन में डालना है. How do we clean our water system? We just clean the water system like this. Any specific precaution while making enzyme for self-use? Self-use in the sense खाने पीने का आप बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है. You can use it with a good fruit you can make. और ये किसी का भी बन सकता है. Yeah, for flower also the ratio is same. So flowers are usually volumetric. So we need to add a lot of flower petals to make the enzymes. To get, अगर fruit अगर इतना सा है 300 grams, flowers will be so much of 300 grams. So you have to put so much of flower. लेकिन वो weight or ratio is the same thing. So इसमें और कोई डाउट है तो you don't need extra vinegar when you make enzyme. You don't need anything extra, and you can use it in dishwash liquid absolutely fine. There is
देखिए हमारा फोकस एक ही है कि हम अपने मिट्टी को, अपने पानी को और अपने हवा को कैसे साफ रखें। तो इसको जितना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना हमारा रिसोर्स अच्छा होएगा। यस चंदूलाल जी, मैंने देखा आपका एंजाइम अच्छा बन रहा है। आई कांट हियर यू। ओ लवली। आई कांट हियर यू। आई कैन नॉट हियर यू चंदूलाल जी। नो। आप मैसेज लिख दीजिए यहाँ पे चैट बॉक्स में। आई कैन सी। ओके। अच्छा शिराज जी, मैं जब डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी ना तो आप हिंदी वाला ले लीजिएगा। तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें सब कुछ लिखा रहता है। तो इसमें और हम जितना इसको इस्तेमाल करेंगे ना उतना इसमें हमें जो टेम्परेचर को हम लोग कम कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ मेरे अकेले से नहीं होगा, हम सबको साथ में जुड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सभी इसी धरती पे रहते हैं। Jaggery need not be organic. Any jaggery, jaggery is just the mode of food for those microbes to multiply. So, आप नहीं, आप किसी से भी बना सकते हैं। सी वही मैं बता रही हूँ कि ये एंजाइम, पहले इसको गार्बेज एंजाइम का नाम दिया गया था। और ये मैंने 3 वैरायटी अदरक के बनाए हैं, हल्दी के बनाए हैं एंजाइम। ये सब अच्छे हैं हमारे, किसी ना किसी चीज के लिए इसको हम लोग मेडिसिन के लिए यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बना सकते, ये हर चीज से बन जाता है। लेकिन जो खाने का सामान है उसको हम लोग क्यों, जब तक वो मेडिसिन के लिए नहीं है तो मुझे नहीं लगता हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जो हम अगर हम लोग अपने गार्डन के लिए या अपने घर के सफाई के लिए, तो मुझे लगता है कि हमें वेस्ट से बनाने से ही ज्यादा अच्छा है। हमारा वेस्ट भी मैनेज हो जाता है। और यही वेस्ट, देखिए ये इतना अच्छा चीज है, अगर हम लोग ये वेस्ट को घर से बाहर फेंकते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं या कैसे भी उसको अगर फेंको ना, तो उससे मीथेन गैस बनता है। बायोगैस में भी मीथेन गैस निकलता है। तो बट ये एंजाइम बनाओ तो इसमें ऑक्सीजन जनरेट होता है। तो ये ऑक्सीजन का काम, तो इसलिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि इसको हम लोग करें। नहीं, वी नीड टू मैनेज। यस, यू कैन यूज द रेसिड्यू फॉर कंपोस्टिंग। अगर आप इसको कंपोस्टिंग में उसके रेसिड्यू को डालोगे तो आपका कंपोस्टिंग जल्दी बनेगा। कंपोस्ट पिट से अगर बदबू आ रहा है वो बदबू चला जाएगा। और कंपोस्टिंग बहुत जल्दी हो जाता है, ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है, डिकम्पोज करता है हमारे किचन वेस्ट को। यस एब्सोल्युटली फाइन। लिक्विड जैगरी या जो भी चीज अगर खराब से खराब अगर गुड़ भी मिल रहा है जो फेंकने लायक हो जाता है, उससे भी हम लोग बना सकते हैं। दिस इज जस्ट द मीडियम टू गिव फूड टू द माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स को मल्टीप्लाई करने, उनको आगे खाने के लिए बहुत है, वो लोग खुश हैं। वो गंदा खराब वो सिर्फ हम लोग देखते हैं, but microbes के लिए it's all good. See, when we wash our vegetable, आपने जो क्वेश्चन पूछा, अगर हमारा जो नॉर्मल खाना, जो सब्जी या फ्रूट जो हमें बाजार में मिलता है, अगर हम उसको एंजाइम के बाउल में, मतलब हम लोग धो के ही खाना बनाते हैं ना उसका, या खाते भी हैं, तो उसको एंजाइम से धोएंगे ना, तो ऊपर में अगर कुछ भी केमिकल रेसिड्यू अगर
फ्रूट्स या वेजिटेबल के ऊपर है तो वो भी चला जाता है. We just have to leave it for 15 minutes and it does the work. And it keeps the fresh fruit also for long time. ये wax वगैरह का तो मैं नहीं बोल सकती कि इसको डिसॉल्व कर देता है, लेकिन हाँ, अगर धो के हम लोग फ्रिज उसको रखेंगे तो वो उसका लाइफ ज्यादा मैंने जरूर देखा है फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का. और for irrigation, it again depends how frequently you have to use enzyme, is again depending on the quality of soil of that farm. किसी को किसी में अगर विटामिन या मिनरल्स या एलिमेंट अगर किसी मिट्टी में कम है तो हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा बोलते हैं. अगर उसमें ज्यादा अगर ठीक ठाक है तो वो 1 महीने में एक बार भी इरिगेशन किया तो वो चल जाता है. So it all depends on how and what is the quality of your soil. So quality soil का जो बायोमास होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये ऑर्गेनिक कार्बन बोलो या मिट्टी जो सॉफ्ट बनाने का, ये काफी अच्छा करता है. इसका रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं. नहीं, we don't have to use more and it has to be diluted and used. Yeah, so in that case, for the next one, we add same amount, 3 portion of the waste and little bit from the earlier batch as a inoculation. तो से अगर 200 लीटर का बड़ा ड्रम है तो उसमें 1 लीटर एंजाइम बहुत है आगे करने के लिए. तो इट जस्ट लाइक द वे हम लोग घर में दही जमाते ना, थोड़ा सा दही ले लिया और दूध में मिला दिया तो वो दही बन गया, तो वैसा ही है. These are all और एंजाइम में देखा गया है मोस्ट ऑफ देम द गुड बैक्टीरिया में इसमें लैक्टोबैसिलस ही ज्यादा है. वेरी नाइस. Yes, we can use as a root of medicinal plant also. Can we still use the white layer enzyme? Yes, you can. You just have to filter it out, remove that. And the white layer is like, it is yeast, which can be used for making baking breads and all that. Yes, चंदुलाल जी, आपको क्या सवाल है? या मीठा चाहिए और हेलो हेलो. यस यस, आप बताइए. सुनाई नहीं पड़ रहा, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. आवाज नहीं आ रहा है? अभी हाँ, आ रहा है, क्लियर नहीं है. आप डाल सकते हैं. अब उसे किन्नू का एंजाइम भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें जो हम चाहिए माइक्रोब्स को, वो उसमें माइक्रोब्स है, तो इट जस्ट डजंट मैटर. और जो वाटर क्वालिटी है, डेफिनेटली खुद का हमने देखा है कि जो लेक है वो गंदे पानी से पीने लायक पानी भी कन्वर्ट हुआ है एंजाइम से. तो उम्मीद है मैंने सबका आंसर दिया है. अंजलि जी, आपको कुछ पूछना था? We watch one video, we suggest first one, we have to open the letter to the alternate second one.
See, it all depends how much of gas. If we are making it in the bottle like this, probably you will have to open it every day. It's a small mouth. But if you make it in the drum, you may not need it in, how much we are making. It's all about हम लोग जो इसमें गैस जनरेट हो रहा है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, nothing else. Can we get the uses of? Yes, I will share that detail, Kina. Hello. The uses of all enzymes. Yes. Madam, TDS of water that may affect anything. I have done 2 years back. Then it was more TDS, so that was not effective that much. Is there any role of more? It definitely changes and it brings it to the drinking level. So BOD, COD, TDS, TSS, ये सब हमने पूरे parameters को check किया है and we have seen it bringing the change and bringing it to the potable level. जो drinking water. Madam, my point is to that is the preparation of enzyme. When we use the normal water, so if the water is having more TDS, then is it having any problem to making or No, it doesn't. It Okay, doesn't. okay. It doesn't. Yeah. Yes, we can use the vegetable peels also. So we can use anything. Any part of the plants can be used for making this, but we need to be mindful. What are we making this for? इसका हम करेंगे क्या? तो वो एक बहुत बड़ा पढ़ने का चैप्टर ही हो जाता है कि वेजिटेबल पील से, और वेजिटेबल में भी इतने वैरायटीज हैं, गोभी का कैसा बनता है, लौकी का कैसा बनता है, या अगर प्याज और गार्लिक का हमने बनाया तो हाउ डू वी यूज इट. आई मीन यूजुअली वी डोंट मेक with the peels of onion and garlic, but garlic का जैसे हम लोग उसके बल्ब का definitely बना सकते हैं. That can be used for pesticide kind of thing. We will definitely share. See, all these research paper and all that, we have a website where we have uploaded, and you need to be member of our academy to access all these resources. And we've been updating our papers there on regular basis. So recently in Bombay, 92 technical papers were presented on single day. So we have abstract of all that. There's definitely you can do that. From our website, it is all there. So Chintanji, I think I have answered all the question. Anything else if we have? Yes. Yes. बहुत अच्छे से आपने ये पूरा समझाया एकदम से. एंड इनफैक्ट आई वाज ट्रैवलिंग, सो लेकिन मैंने वो बहुत अच्छा आपने एक एग्जांपल भी दिया कि जस्ट लाइक अ प्राणायाम, जैसे हम प्राणायाम करते हैं योगा के अंदर और एक कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन पूरे शरीर को मिलता है, इसी प्रकार से माइक्रोब्स जो हम लोग जनरेट करते हैं वो ऑलवेज हमको हेल्प करते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे सॉइल हो, चाहे हमारे घर में हो, एग्रीकल्चर में, कहीं पर भी. एंड मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि हम लोगों ने आपको तो पता ही है, पहले भी हम लोगों ने एंजाइम के बारे में डिस्कस कर रहे थे. तो स्पेसिफिकली यहाँ पर जितने भी लोग फार्मिंग के लिए सपोज कोई स्पेशली एंजाइम यूज करना चाहता है, तो हम लोगों ने जिस प्रकार से प्रयत्न किया था उसके अंदर केसुड़ा यानी कि जो पलाश के फ्लावर आते हैं, पलाश केसुड़ा के, उसका हम लोगों ने अलग से एंजाइम बनाया. एंड आई हर्ड समवेयर एल्स दैट कि केसुड़ा के फूल के अंदर बोरोन बहुत होता है, तो बोरोन वाइज यानी कि और उसका यूज, और वो फ्लावर का हम लोगों ने बनाया 90 दिन के लिए कंटिन्यूअसली, एंड मैंने यूटिलाइज भी उसका किया, बहुत सारे लोगों को भी मैंने दिया. मुझे इतना फायदा मिला है कि अभी इतनी 45 डिग्री टेम्परेचर गर्मी के अंदर मेरे घर पे अहमदाबाद के अंदर आई हैव मोर देन 400 प्लांट्स एट माय होम. लेकिन मैक्सिमम सबके अंदर नए पत्तियां आ रही हैं, फ्लावरिंग्स अच्छी तरह से हो रहा है,
एंड इट इज रियली वेरी गुड। उसका सूदिंग स्मेल भी उसका बहुत सुंदर आ रहा है। तो ये प्रयत्न करने के बाद में अभी हम लोगों ने जो बनाने के लिए रखा हुआ है वो गुलाब का किया हुआ है, स्पेसिफिकली फॉर रोज। एंड एक दूसरा बनाया है हल्दी का। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ नागेश जी, बिकॉज वो साइंटिस्ट है, आप लोग भी ये पूरा काम करते हो, तो थोड़ा बनने के बाद में आई वुड गोइंग टू गिव इट टू यू फॉर टेस्टिंग पर्पज ऑल्सो। कि जो हल्दी का बनाया है उसके अंदर, क्योंकि हल्दी इज एंटी कैंसरस, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी बैक्टीरियल। सो उसका प्रयोग करके सपोज हम लोग फार्मिंग के अंदर या इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के लिए सपोज यूज करना चाहे तो उसके कैसे रिजल्ट हमको मिल सकते हैं। और एक जो हमने बनाया था अभी रिसेंटली, जैसे कि हम लोग पंचरस की बात, षडरस की बात करते हैं कि खट्टा, तीखा, मीठा, कड़वा, तुरा, उस प्रकार के टेस्ट की। उनमें से तीखा हम लोगों ने नहीं लिया अभी, लेकिन खट्टी कैरी यानी कि मैंगो में से, आम में से हम लोगों ने खट्टा एक एंजाइम अलग से बनाया। फिर एक हमारे यहाँ पर एक लूणी की भाजी आती है, उसको गुजराती में लूणी की भाजी बोलते हैं, यानी कि वो एडिबल है, उसका सॉल्टी टेस्ट होता है, तो वो हम लोगों ने लिया। एंड चीकू का स्वीट के लिए लिया, और नीम का हम लोगों ने लिया उसके लिए। उसके अंदर भी पलास यूज किया, और नीम का कड़वे के स्वाद के लिए, और पलास का तुरीय स्वाद होता है, तुरा स्वाद होता है। तो ये 5 एंजाइम को हम लोगों ने अलग अलग बनाकर फिर उनको मिक्स भी किया है, और फिर उसका यूज करते हैं, तो उसका भी एक रिजल्ट मिलता है। और मेरे पास में एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ, तो लेकिन मैं कल परसों हमारे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उनमें से बहुत सुंदर एक रिजल्ट ऐसा मिला कि पानी के अंदर पहले पीएच उसका लेवल उसका चेक किया, और फिर उसके बाद में एंजाइम डालने के बाद में केवल 1 मिलीग्राम जितना एंजाइम हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर के अंदर डाला, थोड़ी देर के लिए उसको हिलाया, और फिर उसका पीएच लेवल देखा, तो पीएच लेवल वाज 7.2 समथिंग। अर्लियर इट वाज ऑन अ हायर साइड, बट उसके बाद में पीएच लेवल इमीडिएटली मेंटेन हो गया। तो मैं आपने जो भी बताया आज, तो मैं ये एग्जाम्पल के द्वारा मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खाते हो, न्यूट्रिशियस फूड लेते हो, लेकिन आपके पाचक रस यानी कि आपके शरीर के अंदर ही एंजाइम नहीं बन रहे हैं उसको पचाने के, तो फिर वो कोई भी खाया हुआ आपका वो कुछ शरीर में टिकने वाला नहीं है। इन द सिमिलर मैनर आप एग्रीकल्चर के अंदर कितने भी बढ़िया प्रकार के आप फर्टिलाइजर डालोगे, खाद डालोगे, पंचगव्य बनाओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन जमीन का और पानी का पीएच लेवल मेंटेन नहीं होगा, तो ये माइक्रोब्स उसके अंदर चाहिए। इट इज इनएविटेबल, यानी कि ये ऑप्शनल नहीं है। आप सब लोगों को एंजाइम के बारे में इतना समझ लिया है, आप सब लोगों ने बनाया भी होगा, आप सब लोगों को उसका ये प्रैक्टिकल होमवर्क आपका आज से शुरू होता है, 90 डेज के अंदर बन जाता है। आप लोग एटलीस्ट 5-6 बॉटल का 5-5 लीटर या ऐसे अलग अलग करके 1 वीक के लिए बनाना शुरू कर दे, और फिर उसका देखें। और बीच में कभी भी हमको प्रीति जी की जरूरत रहेगी डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए, वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट हर, हम फिर से उनको इस मंच के ऊपर बुलाएंगे, ताकि जैसे जैसे आपका बनता जाएगा तो क्या उसके अंदर होता है, क्या गतिविधियां होती है, तो आपके एक्सपेरिमेंट के लिए हम आपको बताएंगे, लेकिन उसका उपयोग भी जरूर से करें। मैं तो खुद 4-5 साल से यूज कर रहा हूँ, एंड हम लोग बहुत ही एंजाइम छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं किड्स गार्डनिंग में, कि बच्चे भी एंजाइम बनाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। आपके घर की गंदी वो पानी है, पानी के अंदर भी थोड़ा सा डाल दो, पानी आपका ठीक हो जाता है कि नहीं प्रीति जी? और दूसरा ये है कि सपोज आपको कल, जैसे कि संडे के दिन आपको एंजाइम का प्रयोग करना है, सपोज एग्जांपल, तो आप सैटरडे के दिन रात को वो पानी को तैयार कर दीजिए, तो 12 घंटे के भीतर इतना सुंदर तरीके से वो घुल मिल जाएगा उसके अंदर, इतना बेस्ट क्वालिटी का हो जाएगा। और आप सुबह में करिए, और अदरवाइज सुबह में समय नहीं है तो शाम के समय के ऊपर आप करिए उसका छिड़काव, ताकि वो इवेपोरेट भी ना हो जाए, गर्मी धूप के अंदर सीधा नहीं करना है। एंजाइम का आप स्टोरेज भी करोगे तो छांव के अंदर करो, है ना? ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। मेरे लिए तो रिपीटेशन भी था और बहुत अच्छा भी था, और बहुत सारी क्लैरिटी भी मुझे मिली। मैं नागेश जी को भी इनवाइट करूंगा, और उमा जी को भी मैं कहूंगा कि आप लोग यहाँ पर आए और बताए। और पहले उमा जी को बोलने दीजिए, उमा जी को बोलने दीजिए। यस उमा जी।
हमारा भी from Art of Living we have had lot of experience with enzyme. पहले वो मलेशिया के हमारे devotees when they came to Bangalore, a decade ago, I think, they taught us how to do this enzyme. And since then, in many parts of the country, all agriculture teachers and others also, we keep doing this. As you mentioned, Preeti ji, we use it at home, we use for agriculture, and sometimes we have also used this in our projects and cleansed the tributaries, the wetlands. We have used it as bioremediation and water bodies. So we have had very good result with all these things. So it was a very enlightening thing because the way you presented, I really liked it. Thank you so much for being with us today. Thank you, Uma. एंड उमा जी, आपका ये बताइए, आपने वो जो शेयर कर सकते हैं तो, बिकॉज अभी रिसेंटली यू रोट वन वाइट पेपर ऑन दिस एंड रिसर्च आपने जो दिया था, प्लीज शेयर इट, यानी कि सबको बता सकते हैं आप. Yeah, last year I had presented this one paper on wetland restoration with bioremediation and phytoremediation. And in our project, I had used both the methodology because bioremediation, when I combined with phytoremediation for the East Calcutta wetlands, it gave a very good result to clean the water. And the oxygen levels in the water increased, the BOD, COD, all that. Similarly, we had another project in Tamil Nadu where we had tied up with the government of Tamil Nadu, Madras Municipal Corporation, and there 80 water bodies we could cleanse and revive the aquatic life there. So very good result we got in both the places, in Calcutta as well as in Tamil Nadu. So on this I had written a paper and published. Very nice. Yeah, thank you. Magi, this Dr. Joanne, she's from Malaysia, who had come from Malaysia to Bangalore, Art of Living, and she's the one who taught. So she's a good friend and she's been associated with our academy. She's an advisor to us, and yeah, so we are still working together with Dr. Joanne and BA. Very nice, very nice. Yeah. Thank you so much for today's session. प्रीति जी को और उमा जी को और चिंतन जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक और जो प्रॉब्लम है धरती की उसको सॉल्व करने के लिए एक कॉमन डिबेट के फोरम पे बातचीत किया. वन, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप बायोएंजाइम बनाते हैं तो बनाते टाइम जैसे प्रीति जी ने कहा कि बॉटल को आपको ढक्कन को खोलना है, तो ढक्कन को धीरे धीरे खोलना है वन, और दूसरा ये है कि उसको अपने फेस से दूर रखना है. आप अपने फेस से दूर रखिएगा ताकि आपको बहुत सारे बार ओजोन का और ऑक्सीजन का जो स्मेल है वो आप लोग बेयर नहीं कर सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिए. एक दूसरा, जो बॉटल को आप जब लेते हैं तो वॉल्यूम और वेट का थोड़ा सा अंदाजा जो है आपका रखिए कि 1:3:10 का जो रेशो है उसके ऊपर जब बात करना है आपको तो वो साइंटिफिक मेजरमेंट होना चाहिए कि वेट और वॉल्यूम और उसको कन्वर्शन जो है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ताकि आप उसको परफेक्टली काम कर पाएं. क्योंकि जब आप बायोएंजाइम बना रहे हैं तो एक साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं आप, और प्रोसेस फॉलो करते टाइम जो प्रोसेस आपको बताया गया है उसको आप फॉलो करें. क्योंकि होता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बड़े मैच्योर हैं, वो लोग बायोएंजाइम का पूछते टाइम तो बहुत सारी चीजें करते हैं लेकिन बनाते टाइम उतनी ज्यादा गलती करते हैं. क्योंकि एक बायोलॉजिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी और आपकी जो आंख के सामने जो हो रहा है उसकी प्रैक्टिस में बहुत अंतर है. इसको आप कृपया ध्यान देंगे तो आपका जो प्रोसेस और आपका जो परफेक्शन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा होगा. आपको ये जरूर बताया 1:3:10, तो 1:3:10 इज ए नॉट ए जोक, क्योंकि आप लोग एक बड़े माइक्रोब्स को डेवलप कर रहे हैं और जितना परफेक्ट डेवलप करेंगे वो उतना आपके लिए यूजफुल होगा. आप जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आए कि हम लोग इसको कहाँ पर यूज करें, कैसे यूज करें, कब यूज करें, किस तरीके से बनाएं,
तो ये सब बनाने के बाद आपके यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने अगर प्रीति जी ने कहा कि मैं अपने पानी में बायोएंजाइम डालती हूँ और पीती हूँ, तो वो जो बायोएंजाइम है वो ईटेबल बायोएंजाइम है और उसको अलग से प्रिपरेशन करते हैं और वो उसको फिल्टर प्रॉपर करती हैं। तो आप उस चीज का ध्यान रखिएगा। और वो बिल्कुल एक ड्रॉप लेती हैं, एक ड्रॉप वर्ड यूज किया उन्होंने। आप इस चीज का, नहीं तो आपको कल को प्रीति जी को कहें कि आपने तो हमको पीने के लिए कह दिया था और आपने जो अपना एंजाइम बनाया है वो किसी और चीज का बना लिया है। तो ये चीज का ध्यान रखिए कि आपको किसका एंजाइम पीने के लिए बनाना है और किस चीज के लिए पीना है, इसके लिए बनाना है। इस सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी 90 डेज कवर होने दीजिए, उसके बाद इसका परफॉर्मेंस और इसकी रिपोर्ट को हम लोग हमारे पास जो एकेडमी है वो टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको। अगर बायोएंजाइम बनाते हैं आप और अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप एकेडमी के साथ कांटेक्ट करके और चिंतन जी के माध्यम से या उमा जी के माध्यम से या किशोर भट्ट जी के माध्यम से, आप किसी के माध्यम से हमको अप्रोच कर सकते हैं एकेडमी को। और उसके साथ में आप अप्रोच करके अपना एंजाइम को टेस्ट करने के लिए आप बात कर सकते हैं, तो वो आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। एक मतलब कहने का मतलब ये है कि एकेडमी और ये ऋषि कृषि का जो फोरम है वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है, आपको प्रॉपर टीच करने के लिए है और आपके साथ में आपको अच्छे से अच्छा एक प्रोग्रेस और आपकी जो हर प्रॉब्लम को हल करने के जो सॉल्यूशंस है आपके सराउंडिंग, और उन सबको हम लोग एक कलेक्टिव फॉर्म में काम करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग बाग कहते हैं किचन वेस्ट। मैं कहता हूँ किचन वेस्ट नहीं है, वो किचन का बचा हुआ मटेरियल है जो अभी हाल आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं, कि वेस्ट नहीं है वो भी। मैं वेस्ट वर्ड हटाना चाहता हूँ वहां से सबके लिए, ताकि वेस्ट जो वर्ड यूज करते हैं लोग बाग उसको बड़ा मतलब वेस्ट करते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा डाउन तरीके से ट्रीट करते हैं। क्यों कि वो वेस्ट हो गया? वेस्ट नहीं है वो। उसमें भी बहुत सारे लोग पुराने टाइम में हमारे यहाँ पर बहुत सारे छिलकों की भी सब्जी बनाई जाती थी, क्योंकि जब उस टाइम हम इतना पेस्टिसाइड यूज नहीं करते थे। उस टाइम पे बहुत सारी चीजों को इस तरह से बहुत सारे, आज भी एप्पल खाने का तरीका लोग बाग पूरा छिलके सहित खाते हैं एप्पल। तो ये केला भी इवन पूरा छिलके सहित खाते हैं बहुत सारे विदेशों में। तो लेकिन ये चीज है कि आपके पास में वो सेफ्टी मेजरमेंट के लिए है वो सारी चीजें, तो प्लीज उसका ध्यान रखिए। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना और बहुत अच्छे से प्रीति जी ने कहा और उमा जी ने अपने केस हिस्ट्री रखी, चिंतन जी ने एक बोरान के लिए बात किया है। तो वो सब चीजों को हम एक कलेक्टिव फॉर्म में अपने जो पार्टिसिपेंट हैं उनको मौका आएगा तो उनको गिफ्ट भी करेंगे हम बायोएंजाइम बाद में, और उनसे गिफ्ट भी लेंगे। तो दोनों का हैंड ओवर टेक ओवर होगा आपस में। बहुत बहुत धन्यवाद सबका और आज के लिए शब्बा खैर। यस नागेश जी, प्रीति जी भी आराम से बहुत सिखा रही थी, बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। मैं ट्रैवलिंग करता था तो ऐसे लग रहा था कि 1 to 1 आप एकदम अच्छी तरह से सिखा रहे उसको। मेरे ख्याल से किसी को इसके ऊपर आज के सेशन के बाद में डाउट नहीं रहना चाहिए एंजाइम के लिए। आपका जो भी प्रैक्टिकल होमवर्क आपको जो देने के लिए बोला है सब लोगों को, उसके अंदर आपको आज से ही शुरू करना है, एंजाइम आपको स्टार्ट करना है बनाना। ठीक है, यस नो या? तो आप सब, बहुत सारे लोग वीडियो भी बंद रखते हैं अभी। आई थिंक वी कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग